खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें। बस जल्दी कर देता हूँ। आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी। My submission is, it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been यही राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो। आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई। राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर he was entitled to that, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party? They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Rizafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP, time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship you want to suffer the consequences. I should conclude early so that. Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया है. देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality. For something very minor within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This may be a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the election. आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, founding member है वो. Sir, founding member if he turns against his party, तो क्या वो party उसको रखने की compulsion है? देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी अब पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within.
ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें. क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. नहीं लगाया. in any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नहीं केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक आदमी और देखिए नो आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप ज्वाइन against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर एस अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल हफीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मिराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1970. तो आपकी पार्टी में आ गए. He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना. अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना. क्यों एक मतलब इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है. इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, ये बात बार सुन चुके हैं. मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल आगे खान साहब वी हैव हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात. वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली. अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें. 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं. अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत. सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको. क्यों छोड़े हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है. अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को. सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled. आप दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है. वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना. तो आपके कहने से बस काफी है. पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते and would have challenged that determination. मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel?
I will go to a proper court. Why would you challenging my no? You under should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member. Khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो फिर को मैं ही deny कर रहा हूँ. तो देखिए self serving argument तो नहीं चलेगा ना. नहीं ये सर चलिए खैर आगे बढ़े. We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol ये एक अलग बात is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात हमने नोट कर ली. Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब बात आ जाएगी. Do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो. आज बाय दिस एक्ट ऑफ ACP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट. खान साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना. ठीक है ना. अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को. इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखे ना. हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की ठीक है लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें. हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर. 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है. सर इसमें ये कहा है wherein wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even ये बात million वाली बात हो गई ना. आगे बढ़ते हैं ना. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence. That the Constitution is equally a legal and a political document.